Assalamu alaikum dear students. This is class 12, subject economics, higher secondary school Khumrial. Topic is theory of demand. Subtopic is demand schedule. Yesterday we discussed about demand and quantity demanded. Today we are going to discuss concept of demand schedule. Question is what is demand schedule? What are its concepts or discuss the concept of demand schedule. Now, what is demand schedule? Demand schedule is a table showing the relation between different quantities of a commodity. Demand schedule is a table showing the relation between different quantities of a commodity to be purchased at different prices of the commodity. According to Samuelson, the table relating to price and quantity demanded is called the demand schedule. According to Samuelson, the table relating to price and quantity demanded is called demand schedule. Concept of demand schedule. Concept of demand schedule. Concept of demand schedule includes number 1 individual demand schedule, number 2 market demand schedule. Now what is individual demand schedule? Individual demand schedule, it refers to demand schedule of an individual buyer of a commodity in the market. It shows quantities of a commodity which an individual buyer buy at different possible prices of the commodity at a point of time. This is the demand schedule of an individual. Demand schedule of an individual or individual demand schedule. Price of ice cream in rupees. Price of ice cream in rupees. Quantity demanded units. When price is rupee 1, ice cream number of ice cream demanded is 4. यानी 1 रुपए में 4 आइसक्रीम हम ये डिमांड शेड्यूल में 1 रुपए में 4 आइसक्रीम आते हैं, यानी 4 आइसक्रीम की डिमांड है यहाँ पर जब कीमत है 1 रुपए. When price is ₹2, demand decreases by 1, here it is 3. Quantity demanded is 3. जब 2 रुपए तो क्वांटिटी डिमांडेड घट कर 3 ही रह गई. जब 3 रुपए कास्ट आया यहाँ एक आइसक्रीम का तो क्वांटिटी डिमांडेड रह गई 2. यानी यहाँ फिर ये डिमांड घट कर रह गई यानी डिक्रीज हो गई 2 पर आ गई. When ice cream sells at ₹4, then quantity demanded decrease, it is 1. यानी 1 रुपए में अगर 1 रुपए आइसक्रीम की कीमत है तो 4 आइसक्रीम बिकते हैं, यानी 4 आइसक्रीम की डिमांड होती है. जब 4 रुपए में 1 आइसक्रीम आती है तो सिर्फ एक ही आइसक्रीम बिकती है, यानी एक ही आइसक्रीम की डिमांड है. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं जब प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा होती है, जब प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम होती है. जब प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम होती है, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा होती है. दिस शोज हियर टेबल शोज एज द प्राइस ऑफ आइसक्रीम increases, quantity demanded tends to decrease. When price increases here from 1 rupees to 4, from 4 to 1, quantity demanded decreases by 4 to 1. When price increases by 1 to 4, quantity demanded decreases by 4 to 1. When price is ₹1, demand increases by 4. When price increases by ₹4, quantity demanded decreases to only 1. Price of commodity. So this is the individual demand schedule.
Now, what is market schedule? Market demand schedule. In every market, there are several consumers of a commodity. Market demand schedule represents demand for a commodity by all the consumers in the market. It shows different quantities of a commodity which the consumer intend to buy at different possible prices of that commodity. ये है मार्केट डिमांड शेड्यूल। यहाँ पर एक ही कंज्यूमर नहीं होता है बल्कि बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं और वो गुड्स खरीदते हैं। यहाँ प्राइस ऑफ आइसक्रीम इन रुपीज़, A is demand, B is demand. Here it is A is demand, here it is B is demand, market demand. See here, when ice cream is ₹1, A's demand is 4, B's demand is 5. That means market demand is 4 plus 5, it is equal to 9. यहाँ पर जब ₹1 में 4 ₹1 आइसक्रीम की कीमत होती है, A लेता है 4, B लेता है 5 और मार्केट डिमांड बनती है 9 आइसक्रीम। तो जब प्राइस इंक्रीज़ होता है यानी ₹2 में आइसक्रीम बिकती है तो A's डिमांड 3 रहती है और B's डिमांड आती है 4 पर, तो मार्केट डिमांड बनती है 3 + 4 इट इज़ इक्वल टू 7। दैट मीन्स मार्केट डिमांड डिक्रीज बाय 2 आइसक्रीम। Here it is when price is ₹3, A's demand is 2, B's demand is 3, market demand is 2 plus 3, that is equal to 5. When price of ice cream is ₹4, A buys 1, B buys 2, market demand is 2 plus 1 is equal to 3. So this was the table of market demand schedule. ये है टेबल और ये देखिए टेबल shows when the price of ice cream rises it is market demand falls. Example, when ice cream sells at ₹1, A's demand is 4, B's demand is 5. So market demand is 9. But when price of ice cream rises by ₹2, market demand decreases from 9 to 7. But when price of ice cream rise and goes down to 3 and goes down by ₹4, when price of ice cream rise by ₹4, market demand falls and goes down to 3 here. यानी जब ₹4 में एक आइसक्रीम आती है तो ये मार्केट डिमांड ये फॉल हो जाती है, यानी मार्केट डिमांड कम होकर 9 से आकर 3 तक रह जाती है। तो आज का इतना ही, कल हम इंशाल्लाह इसके आगे देखेंगे। कल तक के लिए